आज क्लास 9 के लिए ट्रायंगल बता रहे हैं। ट्रायंगल जैसे ABC ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है 6 पार्ट्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। 3 साइड्स AB, BC, CA और 3 एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C। फर्स्ट थ्योरम, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका प्रूफ ABC, ये सबसे पहले फिगर ABC ड्रॉ किए। ट्रायंगल ABC इज ए ट्रायंगल। टू प्रूफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DE पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू A। BC के पैरेलल A होकर के DE एक लाइन ड्रॉ किए। द प्रूफ DE parallel BC and AB is a transversal. Therefore, angle 1 is equal to angle 2, alternate interior angles. Again, DE parallel BC and AC is a transversal. Therefore, angle 3 is equal to angle 4. DE is a straight line and A is a point. Therefore, angle 1 plus angle BAC plus angle 3 is equal to 180 degree. From 1 and 2, एंगल 2 के प्लेस पर एंगल 1 के प्लेस पर एंगल 2 एंड एंगल 3 के प्लेस पर एंगल 4 डालते हैं तो एंगल 2 प्लस एंगल BAC प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये प्रूव्ड हो गया। एंगल A प्लस 2 हो गया एंगल B एंड C एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। An exterior angle of a triangle is equal to sum of interior opposite angles. ABC is a triangle and side BC is produced to D. Then angle ACD is an exterior angle. Now we have to prove that angle ACD, exterior angle ACD is equal to interior opposite angle. Sum of interior opposite angles means A plus B. Because C is not interior opposite angles. C is linear pair. Therefore, in a triangle ABC, angle A plus B plus C is equal to 180 degree. Because sum of all angles of a triangle is 180 degree. And angle ACD plus angle ACB is also 180 degree linear pair. Therefore, angle ACD plus angle C is equal to angle A plus B plus C. CC cancel, therefore angle ACD is equal to A plus B. We approved. Third, sum of all exterior angles of a triangle is 360 degree. Example first. If the bisectors of angle ABC and angle ACB of a triangle ABC meet at a point O, prove that angle BOC is equal to 90 plus half A. Just like ABC is a triangle, OB bisects angle ABC and OC bisects angle ACB. Then prove that angle BOC is equal to 90 plus A by 2. Angle BOC. Proof. Angle OBC is equal to एंगल ABC by 2 क्योंकि OB बाइसेक्ट कर रहा है एंड एंगल OCB is equal to एंगल ACB by 2 because OC bisects एंगल ACB. In triangle ABC, एंगल A plus एंगल ABC plus एंगल ACB is equal to 180 degree. Because sum of all angles of a triangle is 180 degree. In triangle BOC, angle BOC plus angle OBC plus angle OCB is equal to 180 degree. From 1, angle OBC is equal to ABC by 2. Then in triangle BOC, angle BOC plus OBC के बदले एंगल ABC by 2 and OCB के प्लेस पर एंगल ACB by 2 इक्वल टू 180 डिग्री. फ्रॉम सेकेंड, एंगल ABC प्लस एंगल ACB
is equal to 180 minus angle A. तो फ्रॉम थर्ड एंगल BOC प्लस यहाँ हाफ कॉमन ले लिए, हाफ इंटू एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री. Therefore angle BOC plus half into angle ABC plus angle ACB is equal to 180 minus A. So angle BOC plus half into 180 minus A is equal to 180 degree. Therefore angle BOC plus half into 180 90 minus half angle A is equal to 180 degree. Therefore angle BOC is equal to 180 minus 90 plus half A is equal to 90 plus half A. ये प्रूव्ड हो गया. सेकेंड क्वेश्चन, PQR इज ए ट्राइंगल. दिस एंगल इज 30, दिस एंगल इज x, दिस एंगल इज y, दिस एंगल इज 40 एंड QT परपेंडिकुलर PR. तो फाइंड x एंड y. इन ट्राइंगल PSR y is an exterior angle. Therefore exterior angle PSQ is equal to x plus 30 degree. Exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. Therefore y is equal to angle PSQ is equal to y is equal to 30 plus x. In triangle QTR 90, 40 and this angle is x. Therefore x plus 90 plus 40 is equal to 180 degree. Therefore x is equal to 50 degree. And from 1 y is equal to 30 plus x. Therefore y is equal to 30 plus 50, 80 degree. Question, ABC is a triangle. BE bisects one base angle ABC and CE bisects one exterior angle ACD. Prove that angle E is equal to half angle A. Proof. In triangle ABC, exterior angle ACD is equal to angle A plus angle ABC. Therefore half angle ACD is equal to half angle A plus half angle ABC. Half of ACD is equal to angle 2 because CE bisects angle ACD. Therefore half angle ACD is equal to angle 2. Then angle 2 is equal to half angle A plus angle 1 because BE bisects angle ABC. Therefore half angle ABC is equal to angle 1. Again in triangle BCE, exterior angle ECD is equal to angle 1 plus angle E. Therefore angle 2 is equal to angle 1 plus angle E. Now from 1 and 2, angle 2 is equal to this, angle 2 is equal to this. Therefore angle 1 plus angle E is equal to half angle A plus half angle 1. 1 cancel, therefore E is equal to half A. Next question, ABC is a triangle. BA is produced to D. AE bisects angle DAC. Angle B is equal to angle C. To prove AE parallel BC. In triangle ABC, exterior angle CAD is equal to angle B plus angle C. Now angle CAD is equal to 2 angle 2 because AE bisects angle CAD. Then 2 into angle 2 is equal to angle C plus angle C because angle B is equal to angle C. Therefore 2 into angle 2 is equal to 2 angle C. 2 cancel. Angle 2 is equal to angle C. Alternate interior angles. Therefore AE parallel BC.